Hello everyone, I'm ready with the new video, and in this video I'm just discussing about the construction of a triangle. Before going to construction of a triangle, I just want to discuss the properties of a triangle. Simply, the definition of triangle is a simple closed figure enclosed by three line segments or three lines. We can say a simple closed figure enclosed by three lines is called triangle, in which we have total 6 elements which are basically we can have total 9 elements. So let us discuss what 9 elements are there, but out of those 9, 3 are included in the remaining 6. So that generally we say that there are 6 elements of a triangle. Let us consider one triangle ABC here. यहाँ पर जो triangle ABC है उसको हम लेते हैं. तो when we talk about the elements of a triangle means parts of a triangle. There are basically 2 things which we discuss. First one is sides. So in a triangle there are 3 sides. In this triangle particularly, the sides are AB, BC and CA. तो यहाँ पर जो साइड्स है उनको हम सिंपली AB, BC और CA लिखते हैं. In actuality they are line segments. So we should write AB bar, BC bar and CA bar, which is the correct notation for a line segment. But here in general we don't write the bar above the symbol of this line. So we simply write AB, BC and CA. These are the 3 sides. Second element which we consider here is angles. So as we know, the angles in a triangle are 3. So the names of this angle can be written in different ways. Like simply if we write ABC, this is a nice idea, but in certain cases we will be having 2 angles at the same vertex. In that case we have to use 3 vertex criteria for writing an angle. तीनों vertex का use करके हमको angle लिखना होता है. In that case, suppose we want to write the name of angle A, then we can write, we have to start the vertex other than A. अगर A का angle लिखना है by using all 3 vertex of the triangle, तो हमको A को छोड़कर बाकी 2 vertex जो हैं वहां से शुरुआत करनी है. Suppose I start with B, then this angle will be BAC, means जो भी angle हम लिखना चाह रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए. So the name of angle A will be BAC, or either if we start from C, then it will be CAB. So both the names can be written here. Now for angle B, we can start with either A or C. So the names of angle will be ABC or angle CBA. ABC or CBA. So in center we have angle B. So this is the name of angle B here. Now let us come to angle C. Here the name can be ACB, and if we start from B, then it will be BCA. So this is BCA. So all these notations are same. In all we say we have total 3 sides and 3 angles. So total 6 elements are there for a triangle. But sometimes in certain books we get another consideration, that is vertices. यहाँ पर ये जो 3 points हैं A, B, C, they are also an integral part of triangle. So we write simply them as A, B, C. These are the vertices which are generally included in sides as well as angles. जब हम sides लिखते हैं और angles लिखते हैं, दोनों में ही इनको include कर लिया जाता है. इसलिए basically जब हम construction की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ sides और angle में interested होंगे. So this is how we go with the basics of the triangle. So to construct a triangle, here we can see that what we have discussed. यहाँ पर हमारे पास total 6 conditions है जो हमको मिल सकती है. इसमें 3 angles से और 3 sides थी. Out of this total 6 possibilities, to construct a triangle we need only, or we can say exactly
3 conditions. Means जो टोटल 6 एलिमेंट्स है उसमें से अगर हमको कोई भी 3 एलिमेंट्स पता चल जाएंगे तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. Only one condition is not applicable here, that is, if we know all 3 angles, then for the construction of triangle it is very difficult to construct such a triangle in which all 3 angles are given only. Means हमको कोई भी 3 लेना है but मिनिमम 1 साइड शुड बी नोन. अगर एक साइड भी अगर पता होगी तो वो कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है. सो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन. सपोज लेट अस टेक वन क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 4 centimeter and CA is equals to 5 centimeter. So here we have all 3 sides of the triangle. To draw any triangle, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें कोई क्लोज फिगर आएगा तो सबसे पहले हमको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है. Without rough sketch we do not get an idea how to draw that particular triangle. तो रफ स्केच बनाने के लिए हमको सबसे पहले कोई भी एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर लेना है विदाउट एनी मेजरमेंट एंड जस्ट राइट द डिटेल्स व्हिच वी हैव विद अस. AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter and CA is 5 centimeter. Now by using this rough sketch we have to move further to draw an angle, the triangle which is we want to construct here. So we'll start with the base. कंस्ट्रक्शन जब भी ट्राइंगल का होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम एक साइड जो है वो पता होगी, तो यहाँ पर हमको हमेशा बेस जो होगा, जो भी साइड गिवन होगी उससे स्टार्ट करना है. सो टू ड्रॉ एनी ट्राइंगल वी हैव टू जस्ट सिंपली यूज द बेस. हियर द बेस इज हैविंग 4 centimeter length. So let us draw a line segment of length 4 centimeter and the name given to this line segment is B and C. So this is BC line segment having length 4 centimeter. Now to get the remaining vertex A, we have to draw an arc from B at a distance of this length, that is 3 centimeter. And from C, we have to draw an arc at a distance of 5 centimeter. Wherever these two arcs will intersect, that will be named as A. तो यहाँ पर पॉइंट B से हमको एक आर्क बनाना है. तो एन आर्क फ्रॉम पॉइंट B ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. एंड फ्रॉम पॉइंट C वी हैव टू ड्रॉ अनदर आर्क हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो पॉइंट C से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया. वी गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विल नेम इट एज A. नाउ जॉइन A with B and C so that we get a required triangle whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. So this is how we draw a triangle if 3 sides are given. अब कंस्ट्रक्शन में आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें ये जो साइड्स है इनका नाम बदल जाएगा और इनकी लेंथ जो होगी वो आपकी चेंज हो सकती है. सो द स्टेप्स आर वेरी सिंपल. सिंपली जस्ट ड्रॉ अ रफ स्केच and based on the rough sketch we have to start with the base. Then once the base is drawn we have to name the vertex of that triangle B and C. Here in this particular case the remaining vertex will be drawn by drawing two different arcs from the end points of this line segment which is the base of the triangle. So this is how we start the